मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 4 प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के मई 2022 का MCQ सॉल्व करेंगे, इंग्लिश और गुजराती दोनों में ही। 2021 और 20 में पेपर नहीं थे आपके, सो वी हैव मार्च 2019 क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर MCQ नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर आपको जो मैच द फॉलोइंग है वो एक आपको सॉल्व करवा देती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन, conversion of natural things into physical things to satisfy human need is production. Where production is done according to the order of consumer, it is known as job production. Pre-thinking about various problems connected with purchase and then purchasing consciously is known as a scientific purchasing. Then which of the following is not included in the method of purchasing? Warehouse purchasing, raw materials, semi-finished goods, work in progress, finished product, tool component parts etc. are including in types of inventory. The function of inventory control include all of the above, यानी planning for quantity, accounting of inventory and material handling. Which of the following is not included in the limitation of ABC method of inventory control? All of the above is not the limitation, but actually it's the advantage of ABC method, जैसे कि decrease in control expense, simplicity in administration, reduction in wastage, which is not a stage of new product adoption process. So HRD, human resource development, is not the stage, any stage of new product adoption process, जबकि awareness regarding product, information collection and mental evaluation is the process of new product adoption process, which means the process of decision of reducing variety and number of some products, and that is called product simplification. एग्जाम में MCQ हो या ऑब्जेक्टिव्स हो या मैच द फॉलोइंग हो, अल्टीमेटली उसके लिए आपको पढ़ना तो बेसिक थ्योरी है और कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन में आप प्रोडक्ट को आसान करते हैं, तो उसके वेराइटीज़, फ्लेवर, फ्रेगरेंसेस, टाइप्स, साइजेस उसको कम कर देते हो ताकि लोगों को सिंपली समझ में आए कि भाई यही प्रोडक्ट है। देन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में आप उसका रिवर्स करते हो कि एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी रेंज, इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे कलर्स, फ्रेगरेंसेस ये आप देते हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि डिपेंड्स करता है कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर इन्वॉल्व इन, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स से का बिजनेस कर रहे हैं। दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि आपको सिंप्लीफिकेशन में जाना है या डाइवर्सिफिकेशन में जाना है। एंड द प्रोडक्ट मिक्स इज द मिक्स ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट. So the right answer is simplification. Product diversification means expansion of product line by adding new product, making change in old product, launching new models. This definition is given by Jens Lundy. Which of the following are included in the objective of launching new product in the market? So all of the above, because when you want to launch a new product into the market, you want to attract the new customers and sustain the present one. टू डेवलप दी मार्केट। आपको लगता है कि आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उससे सिर्फ आपका ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। एज अ बिजनेसमैन व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग इन सो मेनी प्रोडक्ट्स, इट एक्चुअली एक्सपांड द मार्केट विच बेनिफिट टू कस्टमर्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेट एम यही है। एंड देन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। सो दीज आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गुजराती मीडियम, द सेम ईयर 2022। चलिए शुरू करते हैं। કુદરતમાંથી મળેલી કુદરતી સાધન સામગ્રીનું માનવ જરૂરિયાત સંતોષી શકે તે માટે ભૌતિક વસ્તુઓમાં રૂપાંતર કરવું એટલે એને કહેવાય ઉત્પાદન. જ્યારે ઉત્પાદન ગ્રાહકના ઓર્ડર પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું હોય તો તેને જોબ ઉત્પાદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેફિનેશન્સ તમારે જોબ, બેચ, માસ, કન્ટિન્યુઅસ એ બધી કરી જ નાખવાની. ખરીદી સાથે સંકળાયેલા વિવિધ પ્રશ્નોની પૂર્વ વિચારણા કર્યા પછી સભાનતાપૂર્વક ખરીદી કરવી તેને વૈજ્ઞાનિક ખરીદી કહેવાય. નીચે દર્શાવેલમાંથી કઈ એ ખરીદીની પદ્ધતિ નથી? વેરહાઉસિંગ ખરીદી. કાચો માલ સામાન, અર્ધ તૈયાર માલ, ચાલુ કામ, તૈયાર માલ, સાધનો, આંતરિક ભાગો વગેરેનો સમાવેશ ઇન્વેન્ટરીના પ્રકારોમાં થાય છે. માલ સામગ્રી અંકુશના કાર્યોમાં બધાનો જ સમાવેશ થાય છે. જથ્થાનું આયોજન, હેરફેરનું કાર્ય અને હિસાબી નોંધ. નીચેનામાંથી કોનો માલ સામગ્રી અંકુશની ABC વર્ગીકરણ પદ્ધતિની મર્યાદામાં સમાવેશ નથી થતો? તો આ બધી એની મર્યાદા નથી પણ ફાયદા છે. નીચેમાંથી કયા સ્ટેજનો નવી પેદાશ સ્વીકૃતિની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ નથી થતો? માનવ સંસાધન વિકાસ. ખાલી જગ્યા એટલે અમુક પેદાશોની વિવિધતા અને સંખ્યા ઓછી કરવાના નિર્ણયની પ્રક્રિયા છે. તો સરળીકરણમાં તમે વધારે સિમ્પલ કરી નાખો છો સમજવું પ્રોડક્ટ અને એની પેદાશોને, અને વૈવિધ્યકરણમાં તમે વધારે ને વધારે વેરાયટીઝ એડ કરો છો. રાઈટ. પેદાશ વૈવિધ્યકરણ એટલે નવી પેદાશ દ્વારા જૂની પેદાશમાં ફેરફારો કરવા, નવા મોડલ મૂકવા અને પેદાશ લાઇનમાં વધારો કરવો. આ વ્યાખ્યા કયા લેખકે આપી છે? જેમ્સ લુન્ડી. નીચેમાંથી કોનો નવી પેદાશ બજારમાં મૂકવાનો હેતુનો સમાવેશ થાય છે? તો આ બધા જ
નવી પેદાશ બજારમાં મૂકવાના હેતુઓ છે, જેમાં વર્તમાન અને નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવા, બજારનો વિકાસ કરવો અને નફામાં વધારો કરો. સો these are from Gujarati May 2022. Now we have this March 2019 paper, and in which the last question, because they ask you like this options and then short meaning, 1 marks objective you can say, but this is a match the following or match true pairs. तो ये 3 मेथड है, FSN, VED एंड ABC मेथड. ये तीनों आप एग्ज़ाम में करके जाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए. सो FSN मेथड का मतलब होता है द टर्नओवर रेट ऑफ इन्वेंटरी, इससे ज़्यादा रिलेट करता है. VED मेथड में आएगा आपका यूटिलाइजिंग ऑफ स्पेयर पार्ट, एंड ABC मेथड जो है दैट इज़ योर इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल. जैसे कि ABC जो है वो डिसाइड करता है कि भैया आपके प्रोडक्ट को उसकी वैल्यू और उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज किया जाए, यानी कि इन्वेंटरी को उस हिसाब से कंट्रोल किया जाए. VED जो है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, वो स्पेयर पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से हैं जो विटल है, कौन से है जो ज़रूरी है, एसेंशियल है, कौन से है जो डिज़ायरेबल है. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ द यूटिलाइजिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल. FSN इज़ द फास्ट, स्लो एंड नल, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है उनका टर्नओवर कैसा हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, या फिर न्यूट्रल है, कोई आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इट्स वेरी फास्ट और इट्स वेरी स्लो. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. तो ये तीनों का मेन कंसेप्ट ये है जिसके हिसाब से इसको मैच करना होता है, राइट. बाकी आप इसमें जैसे देखें मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया कि व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन, any 2 types of new product, state any 2 cause for the failure of the product. ये सब आपके थ्योरी है. आप इसको MCQ में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, और ये बड़े क्वेश्चंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, राइट. सो चलिए तैयारी करिए. प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट. बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन एवरीवन, बाय.